Okay, so the daily minimum temperature in degrees Celsius in January in Ottawa is a random variable with distribution minus 15.1 and 62. इसका क्या मतलब है? It's a normal distribution with mean minus 15.1. What about the 62? The 62 क्या represent कर रहा है? Fazan, 62 क्या चीज़ है यहाँ पे? It's the variance. Standard deviation क्या हो जाएगी? Square root of 62. ठीक है, उसका square root क्या हो जाएगा? Standard deviation हो जाएगा. Is that okay? हमें क्या करना है? We need to find the probability that a randomly chosen day in January in Ottawa has a minimum temperature above 0 degrees Celsius. So what are we looking for? Temperature should be above 0 degrees Celsius. Fazan, Cambridge exam skip नहीं कर सकता? सामने mid-year skip किया था? Okay. So this is the normal distribution that we have, mu and standard deviation. We know that. We want to find the probability that a randomly chosen day in January has a minimum temperature that's above 0 degrees Celsius. अब यहाँ पे variable क्या है? Temperature की बात हो रही है. Daily minimum temperature, that's our variable. ठीक है? We want the probability of the temperature being above 0 degrees Celsius ये find करना है. ठीक है? क्या करेंगे सबसे पहले? इसको z में कन्वर्ट करेंगे पहले, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. What's the formula that we have for that? Z equals x minus mu over sigma. X की जगह x should be greater than 0. What's the corresponding interval for z? We will say z should be greater than 0, this value that we have here, minus the mean. Mean is minus 15.1 divided by the standard deviation, which is square root of 62. You'll get some value from this. What value of z do we get? Z greater than what? ये क्या आता है? क्या value आती है? 1.918. अच्छा, there's one point that we missed here. आप देखिए टेबल के अंदर जो z की values होती हैं वो 3 decimal places तक होती हैं. Right? You've got 3 decimal places for the values of z. Probabilities are all to 4 decimal places. अब देखें सारी 4 decimal places तक आपको probabilities की values लिखी हुई हैं. So whenever in your calculations you've got z, you will write z to 3 decimal places ताकि आप उसको टेबल में जाके देख सको. जब हम inverse normal करेंगे बाद में तो probabilities 4 decimal places तक होनी चाहिए. तो keep that in mind. Z values 3 decimal places तक रखेंगे और probabilities 4 decimal places तक रखा करेंगे. ठीक है? So now we go back here. In this case, the value of z that we're getting from our calculator, we will round it off to 3 decimal places. Table में जाके कैसे देखेंगे फिर? Okay. Now, how do we find this? Z greater than 1.918. So आप curve बना के सोचने थोड़ा सा. You've got 0 in the middle. .918 यहाँ पर आ रहा है. आपको ये रीजन चाहिए इसका राइट साइड वाला. Can you find that from the table? टेबल से आपको नहीं मिल सकता. टेबल से आपको लेफ्ट वाली ये वैल्यूज मिलती हैं हमेशा सर. ठीक है? वो पूरा नहीं आता, बड़ा हो जाता है उसको. पेपर बता रहे थे. प्रिंट बहुत ज्यादा करना पड़ेगा ना. एनवायरमेंट फ्रेंडली. पीछे बाकी फॉर्मूला प्रिंट हो जाएंगे ना. You don't even need these tables actually. अब तो
ओके अच्छा, ये राइट वाले रीजन तो हम नहीं निकाल सकते डायरेक्टली, तो हम क्या करेंगे, वी विल राइट इट एज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1.918। ये वैल्यू आपके पास टेबल वाली वैल्यू है, किसके ऊपर आप देखेंगे 1.918 के ऊपर टेबल की क्या वैल्यू आ रही। लेट्स गो टू द टेबल। 1.918, this is 1.9, this is 1. What do we get from this? We get this value. Third decimal place is 8. यहाँ पे जाके देख लें 8 पे आपको क्या वैल्यू मिलती है, it's 5। ठीक है, अब वो लिख लेते हैं यहाँ पे 0.9719। इसमें कितना ऐड करना है हमें, 5 एंड पे ऐड कर देना है, that's 0.9724। ठीक है, that's the probability, we write that here 0.9724। we will evaluate it and see what we get, 0.0276। okay, that's this probability. Last question, just 2 more questions, should be quick. The lengths of new pencils are normally distributed with mean 11, so mu is 11, and standard deviation 0.095. We need to find the probability that a randomly chosen pencil has a length greater than 10.9. So probability that x is greater than 10.9, where x is the length of new pencil, जिसको हम x से represent कर रहे हैं। ठीक है, ये probability find करनी है, इसको standardize कर लें पहले। We'll say that's z greater than x minus mu over sigma, which is 10.9 minus the mean divided by 0.095. What do we get? Z greater than what? Minus 1.053, that's what we have. Now again, we think of the curve. This is how the curve looks like roughly. We've got mean in the middle, which is 0. Negative value है, तो ये left side पे आ रही होगी minus 1.053। आपको इसके right वाला एरिया चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको फ्लिप कर देंगे। ठीक है, इसको फ्लिप कर दें। We say this is the same thing as saying z less than 1.053। जब इसके लेफ्ट साइड वाला एरिया देखें, that's the same thing, इसको बस फ्लिप कर दिया। अब ये वैल्यू जाके टेबल से देख लेंगे। This is phi of 1.053, and what's that? 1.053, 1.0, that's here. 5 is right here, so we get this value 0.8531. 1.05 के बाद क्या था, 7। ओके, 7 के नीचे आपके पास क्या आ रहा है, 16। वन 1.053। ओके, 3 के ऊपर आपके पास क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, तो 0.8531 में आपने 7 ऐड कर देना एंड पे, 0.8531, you add 7 at the end, what do you get? 0.8538, that's the probability। ये जाके यहाँ पे लिख देंगे, this is 0.8538, यही था 8538। so that's the probability that we were looking for। ठीक है, so इस तरह से आपके पास कोई डेटा होगा, उससे probability find करनी होगी। it's normally going to be pretty straightforward। प्रॉब्लम आती है when we do it the other way around, जब आपको probability given होगी और आपको डेटा में से कोई मिसिंग चीज फाइंड करनी होगी। okay, so this is what we are given. The random variable x is the length of time in minutes that Jan takes to mend a bicycle puncture. X has a norm distribution with mean mu and variance sigma square. It is given that probability of x greater than 30 is equal to 0.1480 and probability of x greater than 20.9 is 0.6228. Find mu and sigma. अच्छा, 2 missing pieces of information है यहाँ पे, mu भी missing है और sigma भी missing है। ठीक है, हम क्या करेंगे,
we actually have two pieces of information given as well. तो हम दोनों को use करके equations बना लेंगे. We'll get actually two equations, two simultaneous equations जिनको use करके we can find mu and sigma. Let's break it down. So we have the random variable x. It's the length of time. X उसने क्या represent किया हुआ, length of time represent किया हुआ. X is a normal distribution. इसका mean given है और variance given है. मतलब mu or sigma square. And then you're given probability of x greater than 30. That is equal to 0.1480. That's one piece of information. And you're also given probability of x greater than 20.9 is equal to 0.6228. In इस information को use करके अब आपने mean और standard deviation find करना है. Let's start with the first one. X greater than 30 की probability कितनी है? 0.1480. अब X का तो table नहीं होता हमारे पास. What we do first is we convert it to Z. इससे अच्छा probability of Z greater than something. Probability of Z greater than something. We don't know what that is. That is equal to 0.1480. ठीक है? So area towards the right now is 1480. Right side पे area जो है that is less than 0.5. Where do you think the value of Z is going to be? Is it positive or negative? Z is positive. Positive. Z is positive. Z is positive, right? Because right side पे area कम है. So if you have the normal distribution looking something like this, Z will be on the right side there. You don't have to be very accurate here. आपने सिर्फ अपने लिए बनाना है graph just to understand it better. So rough सा बना लें, it's okay. It doesn't really matter. Okay. So right side पे area कम है. इसका मतलब ये हुआ कि Z जो है वो इधर आना चाहिए. Then the area on the right side will be less. So this is positive. Z की value positive है. अब right side पे कितना area है? This is 0.1480. So what about the area on the left friend? Left पे कितना होएगा? 1 में से minus कर दें. Can somebody tell me what this value is? 1 minus 0.1480? 852. 0.852. 0.8520. ठीक है. अच्छा, अब it often helps to write probabilities to 4 decimal places because the table में values होती है ना probability की, they are to 4 decimal places. Right? I've told you about this before as well. Up 4 decimal places तक लिख देंगे, you might actually save yourself from confusion. So you can write 8520 here. So now this gives you that the probability of Z less than the positive value Z, originally be positive है, so that's okay. That is equal to 0.8520. ये आपके पास टेबल वाली फॉर्म है डायरेक्टली, Z less than something positive. आप ये जाके टेबल से देखोगे, phi of Z equals 0.8520. Let's go to the table. Phi of Z equals 0.8520. Let's find that out here. 85, so we've got this 8508, 8531, छोटा वाला ले लेंगे इन दोनों में से. 1.0. Don't forget the 0 here. 1.0 first decimal place आपने यहीं से लेना है. Don't just write 1. It's 1.0. And then the second decimal place is 4. 1.04. How much do we have to add here? 8 में कितना add करेंगे? 12 add कर देंगे.
12 आप देख लें यहाँ पे किधर आता है. We've got 12 here, so the third decimal place should be 5. 1.045. We write that value here. We say z is equal to 1.045. ये आपके पास z की वैल्यू आ गई. ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, z equals x minus mu over sigma. z की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1.045. रिमेंबर हमने डिसाइड कर लिया था पहले, फिगर आउट कर लिया था, z has to be positive, so we just use that value directly. Positive value भी 1.045 equals x. What's the corresponding value of x? 30. 30 minus mu over sigma. So we get an equation in mu and sigma. इसको आप simplify कर लें, and you get 1.045 sigma plus mu equals 30. That's one equation that you have. ठीक है, let's use the other piece of information that we're given now. दूसरी उसने क्या कहा था, उसने कहा था probability that x is greater than 12, probability of x being greater than 20.9, that is equal to 0.6228. ठीक है, अच्छा, again let's think about it. What do we do first? We convert it to z first. We say probability of z greater than something is now equal to 0.6228. So area towards right is greater, ठीक है. So right side के ऊपर आपका greater than 0.5 है. So where do we place z then? Negative side. Negative side, right? Right side पे area ज़्यादा होना चाहिए, so z should be here. Z is negative. Keep that in mind now. Z की value negative है, and पे आपने z को negative लिखना है. So we are given that this area on the right side is 0.6228, but we don't have this form in the table. Table में तो क्या form होती है? Table में हमारे पास form होती है probability of z less than something positive. That's the form that we're given in the table. We have to convert it to this form. तो हम क्या करते हैं, इसको flip कर दें. So जो flip करते हैं, we get that the area towards the left of the corresponding positive value should also be 0.6228. ठीक है, आपने सिर्फ फिगर को फ्लिप कर दिया कि z की पॉजिटिव वैल्यू जो होगी उसका बस साइन अपन पॉजिटिव कर दिया, उसके लेफ्ट साइड पे एरिया कितना होना चाहिए, that should also be 0.6228. So we say probability of z less than the positive value z, that is equal to 0.6228. That means phi of z is equal to 0.6228. ये वैल्यू जाके फाइंड कर लें, इस प्रोबेबिलिटी के ऊपर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ z 0.6228. Let's write that here, and now let's search for that. 0.6228. So we've got this and we've got this. इनके दरमियान में होएगा. We take the smaller number 6217. इसके corresponding क्या आ रहा है 0.31. So z equals 0.31. Now how much do we have to add here? 17 में 11 add करेंगे 28 आ जाएगा. We have to add 11. Right side पे जाके देखते हैं. We got 11 here. So the third decimal therefore should be 3. We're getting 0.313. Z की value क्या आ गई 0.313. So we say the positive value of z, remember, that is 0.313. असल में z क्या था? असल में z नेगेटिव था. हम क्या करेंगे अब? हम कहेंगे z is actually now equal to minus 0.313. Now we put this in the formula, which is xz equals x minus mu over sigma. z की वैल्यू क्या आई है? minus 0.313. अगर आपने माइनस प्लस का ख्याल नहीं रखा, you'll end up getting wrong answers at the end. So be very careful that you are putting the right sign for z there. Minus 0.313, that equals x. X की corresponding value क्या है 20.9 minus mu over sigma.
You can solve this, you can simplify this, and you'll get the value for sigma and mu. Mu minus 0.313 sigma equals 20.9. You can make mu the subject from both equations. 20.9 plus 0.313 sigma, and mu equals 30 minus 1.045 sigma. इनको equate कर दें. 30 minus 1.045 sigma equals 20.9 plus 0.313 sigma. इससे आगे आप कैलकुलेटर पे डालें बस और देखें क्या आता है. Sigma is 6.7. Sigma is 6.7. Three significant figures minimum final answers. 6 point. सर मैं चेक करती हूँ फिर से आगे. सर 6.710 ये. 6.710. So we have 6.701. 6.701. Okay. Okay. So 6.70. That's our standard deviation. ठीक है. अब मैं मीन में भी यूज करना है तो उसको 701 लिख लें बेशक. That's fine. ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं लिखना. Let's find the mean now. Mean equals किसी भी इक्वेशन में इनपुट कर दें. 30 minus 1.045 into 6.701. What do we get? So it's 22.997. So 23.0. Yes, so 23.0. That's the value of mean that we have. हमारे पास mean आ गया. So we've got the standard deviation and the mean. That's what you have to figure out. Okay. So the random variable x is normally distributed with mean, mu, and standard deviation sigma. So x is normally distributed, mean mu hai, standard deviation sigma hai. It's given that 3 mu is equal to 7 sigma square. एक उसने relationship आपको already बताया हुआ है mean और variance के दरम्यान में, mean और standard deviation के दरम्यान. ठीक है, that's already given. You've got a probability given, probability that x is greater than 2 mu. That is 0.1016. We have to find the values of mu and sigma. Mu or sigma find कर. ठीक है? Okay, so how do we think about it? We've got one equation already given, and that equation is 3 mu equals 7 sigma squared. We've got another piece of information given. That is that the probability that x is greater than 2 times mu, that is equal to 0.1016. ठीक है, ये आपको एक piece of information दिया हुआ है. इसको यूज करके आप क्या कर सकते हो? अब आप एक और equation find कर सकते हो, and then you can solve those equations to find the value of mu and the value of sigma. Okay. Now, how do we think about it? So what's the first thing we do? इसको पहले z में convert कर लें, right? Because table में तो x की values नहीं होती, table में तो z की values होती हैं. So we write it like this. We say this is probability of z greater than something that is equal to 0.1016. Okay, so that's the first thing we do. Now we have to figure out whether the value of z is positive or negative. Okay, so again, how do we think about it? We say कि अच्छा area जो है right side के ऊपर, greater than का क्या मतलब है? We're looking at right side. Area towards right, or you can say the right side way. What do you have? Is it greater than 0.5 or less than 0.5? It's less than 0.5. Right side वाला area छोटा है, right? तो z कहाँ पे होना चाहिए? Should it be positive or negative? Should it be positive or negative? Where do we place z here? Positive. Right side पे area कम होएगा. अगर हम left पे रखेंगे तो right side पे तो area 0.5 से बड़ा हो जाएगा. Right पे रखेंगे तो right side पे area 0.5 से कम होएगा. So it should be here. The value of z should be positive
because center में 0 होता है z के. This is a positive value of z. So we say ये value यहाँ पे positive होनी चाहिए. So that's the first thing we figured out, z की value positive. Okay. Now what we know is this region right here, how much is this? This is 0.1016. This is the area that we have here. अब ये तो टेबल में नहीं मिलता हमें. टेबल पे तो हमें एक पॉजिटिव वैल्यू के लेफ्ट साइड वाला एरिया दिया होता है. हम उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. वो कैसे करेंगे? We will say the region on the left here, this region, this should be 1 minus this, right? ये कितना हो जाएगा? 0.89. No. Can somebody tell me what this is? 8984. Is that what it is? ये मुझे बताते हैं 1 में से माइनस करके. 8981. 81 तो नहीं हो सकता. 84 ही आता ना. सर यही है सर. Yeah, so this is the region that we have on the left side. अब हम उस probability को कैसे लिख सकते हैं? हम कह सकते हैं कि अच्छा probability of z less than this positive value of z, what's that equal to? That's equal to 0.8984. Now this is a form that we can find in the table. ये probability की value है. हम टेबल में जाके देखेंगे इस probability against हमारे पास z क्या है. 0.8984. Let's go to the table and look for that probability. 0.8984. ये आपके पास probability है. You can say this is phi of z, right? Because वो standard form के अंदर है. आपने corresponding z की value find करनी है. Let's find that value. 0.8984. Okay. So we've got this. This is less than 8984. ये greater है. इनके दरम्यान में होगा कहीं पे. आपने छोटी वाली value लेनी है. 8980. So that's what we start from. What value z are we getting? 1.2. And then the second decimal place is 7. How much do we have to add to it? 8980 में कितना add करेंगे end पे? 4 add करेंगे. So we go on the right side. C के अच्छा 4 इधर आ रहा है. 4 के against third decimal place क्या मिलता है हमें? We get 2 here. So the value of z is 1.272. ठीक है? That's what we write here. We say the value of z therefore is 1.272. ये z आ गया हमारे पास. अब क्या करेंगे? अब फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. We've got the value of x. We have to find mu and sigma. फॉर्मूला में वैल्यूज डालते हैं. z equals x minus mu over sigma. What's z? Z is 1.272. X is 2 times mu. Minus mu over sigma. What do we get from this? We get 1.272 sigma. That equals mu. That's another relationship that we have between mu and sigma. Now, एक relationship उसने already में बताया हुआ था. This is equation 1. This is equation 2. इनको simultaneously solve कर लेंगे. You will find mu and sigma. ठीक है? इसको जाके input कर देते हैं वहाँ पे. Let's do that. Let's input that here. We are inputting mu equals 1.272 sigma. वो जाके उसके अंदर input कर देना है. ठीक है? Okay. Let's input that value. 3 into 1.272 sigma. That equals 7 sigma square. इसको सॉल्व कर लें. यहाँ पे हम सिग्मा से डिवाइड कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमें पता है स्टैंडर्ड डेविएशन नेगेटिव तो 0 तो नहीं हो सकती, तो इसलिए डिवाइड कर सकते हैं. अदरवाइज इसका स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है इसको इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का? यू टेक एवरीथिंग टू वन साइड. 3 into 1.272, what would that be?
3 into 1.272 ये कितना आता है? 3.816, right? 816 sigma that equals 0. आप क्या करते हैं? Sigma को common ले लेते हैं फिर. That's the standard way of solving quadratic equations like this. 7 sigma minus 3.816. And then you would say either sigma equals 0 or sigma equals 3.816 over 7. ये हो नहीं सकता. This is not possible. So that's why you can ignore this. ठीक है, क्योंकि अगर ये होगा तो फिर मीन भी आपका 0 हो जाएगा. ये रिलेशनशिप दिया हुआ था उसमें मीन भी 0 हो जाएगा. It doesn't make sense in that case. फिर आपका सारा डेटा 0 0 ही होगा, which is kind of weird. तो ये नहीं पॉसिबल. यहाँ से आपका सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी. Can somebody tell me what this is? 3.816 over 7. 0.54? 0.545. 51. Okay, thank you. 5451. That's the standard deviation that we get from this. ठीक है? That's the value of standard deviation. We put that back. इसमें जाके input कर दें. Equals 1.272 into sigma. That's 0.5451. What about this? ये क्या आता है? 0.6934. That's the value of mean that we have. Okay, so that's what we were looking for. We were looking for the mean and we were looking for the standard deviation. ये हमने दोनों find कर लिया. Go there. Now it is given that y is normally distributed with mean 33 and 21. What's 21? Abdullah and Momin. 21 क्या चीज़ है? What does this 21 represent? $33 तो मीन है आपका. ये होती है वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर. जब इस फॉर्म में लिखा होएगा, दूसरा नंबर आपकी वेरिएंस रिप्रेजेंट कर रहा होगा. स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी स्क्वायर रूट ऑफ दैट. ओके, so we've got y is normally distributed with 33 and 21. What that means is mu is 33, sigma square is 21, and therefore sigma is square root of 21. Okay, that's sigma, square root of 21. Okay, we have to find the value of a given that probability that y is between 33 minus a and 33 plus a. That probability is equal to 0.5. A की value figure out करनी है. Given this probability, 33 minus a and 33 plus a, that is equal to 0.5. This is what we're given. Probability given है. आपको again you've got some missing information, वो आपको find करनी है. This is also inverse normal, right? Probability given है, आपको reverse direction के अंदर जाना है. Okay, now how do we think about this? This is an interval that we're given. ये interval given है, ठीक है? अब क्या करें? Any ideas about this? Interval है, this is minus है, this is plus है. क्या कर लें? 33 minus कर लें. 33 minus कर लें, उससे क्या होगा?
सर फिर मेरे पास सिर्फ माइनस है और प्लस है रह जाएगा दोनों साइड्स पे, और हम x माइनस 33 कर लेंगे। ठीक है, फिर नहीं पता, उसके लिए सोचना पड़ेगा अभी। ओके ओके ठीक है। So that's a good starting point. मतलब you were not do exactly that, but it's somewhat going in the right direction. अब देखें इस डेटा का मीन क्या है? Mean is 33, right? Mean is 33 for this data. You've got the same value being subtracted from the mean and the same value being added to the mean. ये जो ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन है x का जो ग्राफ होएगा, x का ग्राफ कैसा होएगा? It's a normal distribution, right? So if you look at the graph of x, it's going to look something like this. With x on the x-axis, on the horizontal axis, ये x represent कर रहा है. इसके मिडिल में क्या होगा यहाँ पे? Can anyone tell me what we're going to have in the middle here? Mean 33. Mean 30, The mean. 33, right? We are looking for this region. +3 a, जितना राइट साइड के ऊपर है उतना ही लेफ्ट साइड के ऊपर 33 - a. We are looking for this region. This region is given to be 0.5. This region is given to be 0.5. ठीक है? Now, using the symmetry of the curve, what do you think about the areas on the sides? ये region कितना है और ये region कितना है? 0.25 each. Right? 0.25, 0.25. Yeah. 0.25 and 0.25, right? So right वाला region कितना होएगा? 0.25. और left वाला region कितना होएगा? That will also be 0.25. So what you can actually do here is you can simplify this and say, अब इस चीज को simplify करके ऐसा लिख सकते हो that probability of x being less than 33 plus a, यानी इस वैल्यू के लेफ्ट साइड पे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 33 plus a के लेफ्ट साइड पे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है टोटल? 0.75. 0.75, right? 0.5 plus that 0.25, this plus this is equal to 0.75. तो उस इंटरवल को हमने सिंप्लीफाई कर लिया और हमने उसको इस तरह से लिख लिया. And now this is something simple to do, right? इसमें तो हम डायरेक्टली अब क्या करेंगे, इसको z में कन्वर्ट कर लेंगे. पहले z फाइंड करेंगे, टेबल z फाइंड करेंगे, पॉजिटिव है नेगेटिव है, टेबल से z की वैल्यू फिगर आउट कर लेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमारे पास a आ जाएगा. But is this clear to everyone? This is the important point. ये clear है? ये भी इंक्लूड कर लिए. बिल्कुल दरमियान में रीजन का देख रहे हैं, लेकिन हमें इवेंचुअली फाइंड क्या करना है? हमें a फाइंड करना है, राइट? हम सिर्फ ये कह रहे हैं अगर दरमियान वाला रीजन इन दोनों के 0.5 है तो जो ये 33 प्लस a है इसके लेफ्ट साइड पे टोटल रीजन कितना होना चाहिए? वो 0.75 होना चाहिए, राइट? तो 33 प्लस a के लेफ्ट साइड पे 0.75 रीजन है. दैट्स ऑल दैट वी हैव फिगर्ड आउट. अब हम इसको इस इंफॉर्मेशन को यूज करके, जो उसने इंफॉर्मेशन दी थी, हम उसको इस इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करके इस तरह कर लिया. अब हम z टेबल से ये वैल्यू निकाल सकते हैं. नहीं, a कैसे कर सकते हैं? ये तो x की बात हो रही है ना. लेकिन वो करेंगे, लेकिन उससे स्टैंडर्ड डिविएशन में तो शिफ्ट होती है ना. फिर स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों करनी पड़ेंगी. तो अगर आप वो करते हैं, वो आप कर सकते थे. आप इसको इस तरह कर सकते थे, आप इसको z में कन्वर्ट करते हैं. आप कहते हैं z शुड बी बिटवीन
फिर वो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता, z should be between x minus mu, x क्या है 33 minus a minus 33 over sigma, sigma is square root of 21, और दूसरी साइड आपके पास आता है 33 plus a minus 33 over square root of 21, और ये आपके पास हो जाता z between minus a over square root of 21 and plus a over square root of 21. उसमें फिर भी आपके पास इंटरवल आ रहा है, आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाते, आपको सेम आइडिया वहां पे भी यूज करना पड़ता कि अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन a over square root of 21, ये 0.5 थी पहले, दिस शुड हैव बीन 0.75, तो वहां पे भी आप वही आइडिया यूज करते कर्व बना के कि ये रीजन 0.75 होना चाहिए। तो इट्स द सेम थिंग, पहले जी में कन्वर्ट कर लें बाद में कर लें, डजंट मैटर, एंड पे आपको ये सिमेट्री यूज करके वो 0.75 में कन्वर्ट करना पड़ता। ओके अब हम क्या करें, अब वही अपना स्टैंडर्ड तरीका क्या करेंगे, इसको जी में कन्वर्ट कर देंगे, z लेस देन समथिंग is equal to 0.75, you have to figure out whether z is positive or negative, left side पे region है that is less than, sorry greater than, लेफ्ट साइड पे एरिया जो है दैट्स ग्रेटर देन 0.5, लेफ्ट साइड पे ज्यादा एरिया, ठीक है, तो z की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फिर पॉजिटिव होनी चाहिए, फिर ही आपके पास लेफ्ट साइड पे ज्यादा एरिया होएगा। हम z की बात करें, z के मिडिल में क्या होता है, z डिस्ट्रीब्यूशन के मिडिल में 0 होता है आपके पास, you've got 0 here and z should be somewhere here, आपको पता है इसके लेफ्ट साइड वाला रीजन कितना है सारा, ये 0.75 है, this region is 0.75, it's already in the standard form, z less than something positive उस फॉर्म के अंदर ऑलरेडी आ रहा है हमारे पास, हम जाके टेबल से ये वैल्यू देख लेंगे 0.75, लेट्स गो टू द टेबल, हमारे पास phi of z क्या है 0.75, let's find 0.75, 0.75 तो नहीं है, but we've got 7486 here, ठीक है, 7486 के ऊपर और साइड पे क्या आ रहा है हमारे पास, we are getting 0.6 and 7, that's the first and second decimal places, and then we have to, how much do we have to add here, 0.75 पे जाने के लिए we have to add 1/4 add करना है, 1/4 इधर किधर मिल रहा है, 1/4 is going to be somewhere between these two values, लेकिन किसके ज्यादा क्लोजर है हम, 13 के, so we use this value here, that's 4, so we say this is 0.674, ठीक है, ये क्लियर है सबको यहाँ तक, ठीक है, z की वैल्यू 0.674 आ गई, now we go back here, we say z should be 0.674, z की वैल्यू आ गई, अब वहां पे इनपुट कर दें फॉर्मूला के अंदर, z equals x minus mu over sigma, z is 0.674, x की जगह पे हमारे पास 33 plus a था, यहाँ पे 33 plus a minus the mean is 33 divided by the standard deviation, which is square root of 21. You can find the value of a from here, that is 0.674 into square root of 21, and you can see what this turns out to be. a की वैल्यू क्या आ जाती है, .089, that's the value of a that we've got. In Scotland in November, on average, 80% of days are cloudy. Assume that the weather on any one day is dependent on the weather on other days. Use a normal approximation to find the probability of there being fewer than 25 cloudy days in Scotland in November. Achha, so what distribution is it originally? Originally called distribution. 80% of days are cloudy. ये आपको probability दी हुई है किसी चीज की, cloudy होने की probability, that's like 0.8, right?
you know every day is independent of the other day, तो probability same रहती है हर दिन पे. एक दिन अगर cloudy है तो वो अगले दिन का cloudy होने की probability को affect नहीं करता, वो फिर भी 0.8 ही रहती है next day की. ठीक है. You've got the total number of days that you've got. उसमें से आपने find करनी है क्या probability of less than 25 cloudy days. What distribution does it look like? It's binomial, right? Days की बात हो रही है. That's discrete. Number of days आपने find करने हैं. Number of trials, you can say. Number of successes. Sorry, number of successes आपने find करने हैं. Cloudy days. So your success is a day being cloudy. That's your success. उसकी probability आपके पास क्या है? उसकी probability है 0.8. So P equals 0.8. Failure क्या हो जाएगा 0.2. You've got total of 30 days. You're given that n equals 30. ठीक है. आपने क्या find करना है? Probability of less than 25 days being cloudy. ये problem directly भी आप binomial से कर सकते थे. That's possible because इतनी ज़्यादा values नहीं है. आप 25 से लेकर 30 तक फाइंड कर लो, उसमें से 1 में से माइनस कर दो. that would have been possible using binomial as well. कर सकते थे. ठीक है. लेकिन उसने यहाँ पे क्या कहा है? Normal approximation यूज करनी है. So how are we going to do that? We've got these values. We know n, we know p, and we know q. So convert कर देंगे हम किसके अंदर? Normal के अंदर. Normal में क्या चाहिए होता है हमें? Normal में हमें चाहिए होता है mean and standard deviation. Okay, let's find that. Mu equals n times p. What's n times p? 30 into 0.8, that is 24, right? So mu की value 24 आ गई. And then you find standard deviation. Standard deviation का formula हमारे पास होता है npq square root of 30 into 0.8 into 0.2. What do we get from this? 24 into 0.2, that's square root of 4.8. ठीक है. ये हमारे पास आ गई standard deviation. So we've got the mean, we've got the standard deviation. Now what are we looking for? We want to find the probability of there being fewer than 25 cloudy days. So क्या find करना है? Probability of x less than 25. That's what we're looking for. Binomial में हमारे पास ये आ रहा है, x less than 25. x से क्या represent कर रहे हैं हम? Number of cloudy days, number of successes, right? X represents number of successes. This is what you want to find out. इसका equivalent normal में क्या होएगा? Normal में इसका equivalent क्या होएगा? So you've got two options. 24.5 से less कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं? 25.5 से less. Which one do we choose? 24.5 or 25.5? 25 include करना है नहीं करना? नहीं करना. This should not be included. तो 24.5 के लेफ्ट पे करेंगे तो 25 नहीं इंक्लूड होएगा. 25.5 के लेफ्ट पे करेंगे तो उसमें तो 25 आ जाएगा, right? So we should be doing 24.5. That's what we should be choosing here. You say this translates to x less than 24.5 in normal distribution. Is that okay? अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे उस तरह z डिस्ट्रीब्यूशन से करते हैं, उसको z में कन्वर्ट कर लें. z less than 24.5 minus the mean is 24 divided by standard deviation, which is square root of 4.8. What do we get from this? z की वैल्यू यहाँ से क्या आती है? Okay, let's look at that. 0.228. So z less than 0.228. It's already that form. Z less than something positive. So कुछ change करने की जरूरत नहीं है. Directly आप जाके देख लेंगे. So we're looking for phi of 0.228. ये आपने जाके find कर लेना.
z की वैल्यू जहाँ पे 0.228 है उस पे प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है? अच्छा 0.2 and then 2, that is 0.5871. okay 0.5871 ये हो गया. थर्ड डेसिमल वाज 8 अब जाके देख लेते हैं. 8 is here. What are we getting at 8? 3.1. एंड पे आपने 3.1 ऐड कर देना. What do we get from this? आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं. कैलकुलेटर पे जस्ट इनपुट दिस थिंग, ये इसको ऐड कर लें. 5871 प्लस 3.1 आपको नंबर मिल जाएगा कोई, इसमें बस डेसिमल लगा दें. You should be getting 0.5902, right? So that's what we input here. We say this is 0.5902. That's the probability. ठीक है. अच्छा, let's look at the second part. Second part says give a reason why the use of a normal distribution is justified in this case. You have to justify this. So what are the conditions that we have for that? We've got two conditions. NP should be greater than 5 and NQ should be greater than 5. ये दोनों conditions meet होनी चाहिए. आपने ये सिर्फ नहीं लिख के आ जाना, because that's just a general statement. ये तो आपने याद किया होगा, आप वहां पे लिख दोगे. You'll not get marks for this. You'll have to check that for this particular example. N, P और Q की values जो आपके पास है, उनमें input करके आपको ये check करना पड़ेगा. ठीक है. So what you'll do is you will evaluate NP. NP evaluate करेंगे. ये क्या आएगा? N की value क्या थी? N was 30. N was 30 into P. P is 0.8. You evaluate this. This is 24, and that is greater than 5. You evaluate NQ. 30 into 0.2, that is 6, and that is also greater than 5. ये आपने दो चीजें करनी. So you say NP is greater than 5 and NQ is greater than 5. Since both of these conditions are met, your use of normal distribution is justified. Okay, let's try this. So we had this survey. A survey of adults in a certain large town found that 76% of people wore a watch on their left wrist, 15% wore a watch on their right wrist, and 9% did not wear a watch. So we've got three kinds of people here. 76% wear it on their left wrist, 15% on their right wrist, and 9% did not wear a watch. Okay. Now, a random sample of 14 adults was taken. Find the probability that more than 2 adults did not wear a watch. What kind of distribution is this? Is it discrete or continuous, first of all? Discrete or continuous? Discrete, right? Adults की बात हो रही है. Number of adults. So it's discrete. दो options हो सकती हैं, binomial or geometric. Can we apply any of those two? 14 adults in total, and आपको पता है आपने number of adults who did not wear a watch ये find करना, right? No, who did not wear a watch. So this is what we are calling success now. जो आपका criteria है, we'll say this is a success. Not wearing a watch is a success in this case. ठीक है? So it's a binomial distribution. It's a binomial distribution with n equal to 14. P, which is the probability of success. Probability of success क्या? Not wearing a watch, that's 0.09. And the probability of failure, therefore, is 0.91. We have to find the probability that more than 2 adults did not wear a watch. So we're looking for a probability of x greater than 2. ये हमें figure out करना है. ठीक है? How do you figure this out? क्या करें? अच्छा. So probability of x greater than 2, ये हमें figure out करनी है. How do you figure this out? This is binomial distribution, right? Binomial में क्या करते हैं? आपको individually सारी probabilities find करनी पड़ती हैं. ठीक है? अब x greater than 2 का क्या मतलब है? You have
x equals 3, 4, 5, 6, 7, 8 until 14. ये सारी कैलकुलेट करनी पड़ेंगी. An easy way to do this is you say 1 minus probability of x less than or equal to 2. आप ये तीनों cases find कर लें. 1 minus probability of x equals 0. 1 minus probability of x equals 1 minus probability of x equals 2. ये तीनों cases उसमें से subtract कर दें. What's the formula that we've got for binomial? X equals R equals NCR. P raised to power R, Q raised to power N minus R. That's the formula that we've got for binomial distribution. For probability of a binomial distribution. How do we find these values now? Just input N R there in the formula. N की value 14 है. 14 C0. P is 0.09 whole raised to power 0 into 0.91 whole raised to power 14. Minus 14 C1 into 0.09 whole raised to power 1 into 0.91 whole raised to power 13. Minus 14 C2 into 0.09 whole raised to power 2 into 0.91 whole raised to power 12. ये हम evaluate कर लेंगे, calculator में डाल दें, you'll get your result from this. What do we get? From 0.1255. Okay, so I think that's correct. Yes, sir. So this is Yeah. what you should, yeah, this is what you should be getting. 0.1255. Okay. Yeah, हमारे पास आ गया first part. Now let's look at the second part. A random sample of 200 adults was taken. Using a suitable approximation, find the probability that more than 155 wore a watch on their left wrist. अब देखें, अब आपकी success के criteria change हो गया. So now success is wearing a watch on left wrist. That's success now. Right? And now we've got a sample of 200 adults, just may say more than 155 की probability find करनी. Now, of course, there are going to be a lot of cases, 156, 7, 8, until 200. So बहुत सारे cases हैं, उसको directly करना तो feasible नहीं है. अगर उसने ये ना भी कहा होता कि approximation use करनी है, you would still have to do that, right? So, अच्छा. So what do we have? We've got binomial. Originally तो वही है, binomial distribution ही है. N in this binomial distribution is what? N is 200. Probability of success अब क्या हो जाएगी? Wearing a watch on the left wrist में it's 0.76. Probability 0.76 है. So failure की क्या हो जाएगी? 0.24. We convert it to normal. Normal के लिए हमें क्या चाहिए? Mean चाहिए. That's n times p, which is 200 into 0.76. What's that? That should be 152. Standard deviation, square root of npq, which is square root of 200 into 0.76 into 0.24. What does this turn out to be? Standard deviation क्या आती है? Standard deviation क्या आती है हमारे पास? $36. Exact तो नहीं हो सकता, दिखाया था into 0.75 तो नहीं था ना, 76 था. 36.48. 36.48. Exact values use करनी है. 36.48 इसका square. 6.04 आ रहा है. इसका square root है ना, 36.48 का square. Yes, right? square root के बाद. अच्छा, square root के बाद exact value आती है.
जी 6.04। नहीं एग्जैक्ट नहीं आती कैलकुलेटर पे देखे 0.039865 मतलब वाली मैं वैल्यू आती आपको राउंड ऑफ करके ही बता रहा हूँ, या 6.339 या है। तो इसको राउंड ऑफ नहीं करना ना यहाँ पे, बिकॉज इसमें हमने कैलकुलेशंस करनी है आगे, वी वुड वांट टू कीप इट इन इन एक्यूरेट फॉर्म, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दे, दैट्स बेटर। 6.039। हाँ उसका कर सकते हैं, दैट्स ओके, इसको स्क्वायर रूट फॉर्म भी रहने दे बेशक, दैट्स आल्सो फाइन, बिकॉज इसकी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कुछ टेबल से गलत वैल्यूज आ सकती हैं अगर आपने इसको गलत कैलकुलेट कर लिया तो, राउंड ऑफ गलत कर लिया। अच्छा अब क्या फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ more than 155 successes, right? More than 155 find करना। So probability that x is greater than 155, that's for binomial. Normal में इसको convert करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? Again we've got to think about this. दो possibilities हैं, या आप कहो 154.5 के right side पे, या फिर आप कहो 155.5 के right side पे। 155 को हमें include करना है या नहीं करना? 155 को नहीं इंक्लूड करना, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 155.5 के राइट पे होंगे rather than 154.5 के राइट पे। So we have x greater than 155.5 because 155 is not included in this. ये आपने evaluate करना है अब normal distribution से। So what we do is we convert it to z first, so it becomes probability of z greater than x minus mu 155.5 minus the mean is 152 divided by the standard deviation, which is 36.48। ये क्या आता है हमारे पास? (3.5) over square root of 36.48। This should be 0.579। Is that okay? यस सर। 5799 5794 है। ओके ठीक है, सो 579 to 3 decimal places, that's what we've got, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब ये इवैल्यूएट करना है, इज इट द स्टैंडर्ड फॉर्म? इट्स नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म, ये z लेस देन पॉजिटिव वाली फॉर्म के अंदर नहीं है अभी, तो हमें ग्राफ से देखना पड़ेगा हम इसको किस तरह से इवैल्यूएट करें। सो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस हाउ द कर्व लुक्स लाइक। मिडिल में दिस इज द z डिस्ट्रीब्यूशन, सो इन द मिडिल वी हैव 0, सेंटर में 0 है, यहाँ पे कहीं पे आपके पास ये 0.579 आ रहा है, इसके राइट साइड वाला एरिया चाहिए आपको, दिस इज द एरिया दैट वी नीड, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसके लेफ्ट वाले एरिया फाइंड कर लेंगे, 1 में से उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, इसे दिस इज द सेम थिंग एज सेइंग 1 minus probability of z less than 0.579। ये आप वैल्यू अब टेबल से फाइंड कर लेंगे। 0.579 के ऊपर टेबल की आप वैल्यू देख लें क्या आती है, 5.579 के ऊपर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या आती है। लेट्स गो टू द टेबल। 0.57 we get this 0.7157 and then 9 पे हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे 31, so we add 31 here, what do we get, 8871, so 0.7188, that's the probability that we get. We write that here, 1 minus 0.7188, we evaluate this turns out to be 0.2812, that's the probability. Just to remind you, this is what we have done until now. We have done how to find probability using given data. Data given होएगा, probability find करनी होगी। आपने क्या करना है, convert कर लेना है x को z में, z less than positive वाली form में convert कर लेना है फिर, और table से probability find कर लेनी है। We've done the other thing that's called inverse normal. Data में से कोई चीज missing है, x, mu या sigma,
probability given होएगी, आपने क्या करना है, z को find करना है whether that's positive or negative. Again, you have to convert it to this form, z less than positive, something positive. फिर आपने क्या करना है, टेबल से probability के corresponding z value find कर लेनी है, उस पर positive और negative लगा देना है और ये फॉर्मूला यूज करके जो भी मिसिंग है वो फाइंड कर लेंगे। दो चीजें हमने पहले कर ली हुई थी। नाउ वी हैव डन बाइनोमियल टू नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन। बाइनोमियल में NP/Q की वैल्यूज होंगी आपके पास, आपने उससे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेने हैं फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूटी करेक्शन कर लेनी है, ठीक है, और कंडीशंस आपने ध्यान में रखनी है, ये दो कंडीशंस मीट होती हैं तो फिर वो आप ये अप्रॉक्सीमेशन यूज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते, राइट? दीज आर द थ्री थिंग्स दैट वी हैव डन प्राइमरीली। नाउ दिस क्वेश्चन basically uses all of those concepts. Look at this now. In tests on a new type of light bulb, it was found that the time they lasted followed a normal distribution with standard deviation 40.6. 10% lasted longer than 5130 hours. क्या मतलब है? Probability of lasting longer than 5130 hours is 0.1. That's what it means, right? So normal distribution है, एक तो हमें ये पता है, it's normal distribution, and then we know the standard deviation of this normal distribution is 40.6. Mean उसने नहीं बताया हुआ, mean आपने find करना है in fact first part में। 10% lasted longer than 5130. अगर हम टाइम जो है वो x टाइम को हम x से डिनोट कर दें तो हमारे पास क्या है, probability that x is greater than 5130, that is 0.1. That's the probability, right? So probability of x being greater than 5130, that is 0.1. That's what we are given in the question. ठीक है, ये क्लियर है सबको? अच्छा, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट के अंदर मीन फाइंड करना है यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है? हम क्या करते हैं, दिस इज इनवर्स नॉर्मल, वी आर गिवन द प्रोबेबिलिटी, वी नीड टू फाइंड सम मिसिंग डेटा, यहाँ पे मीन मिसिंग है वो आपको फाइंड करना है। So how do we think about it? We first convert it to z, we say अच्छा probability of z being greater than something is equal to 0.1. And now we need to figure out whether this value of z is positive or negative. This is what the curve looks like. What we are saying is right side पे जो area है वो कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए? कम होना चाहिए, ठीक है? राइट साइड पे जो एरिया है वो कितना है, दैट इज लेस देन 0.1। राइट साइड पे कम एरिया, इसका मतलब है ये इधर कहीं होएगा, इस साइड के ऊपर, तो z की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो z हैज टू बी समथिंग पॉजिटिव, ये हमने फिगर आउट कर लिया, z पॉजिटिव है। अब ये रीजन है जो हम देख रहे हैं, ये रीजन उसने बताया हुआ, ये कितना रीजन है, दिस इज 0.1. So this region is 0.1. What about the region on the left side? How much is that? That is 0.9. Left side वाला region 0.9 हो जाएगा, फिर अगर right वाला 0.1 है. So what we can do is we can convert it to this form. We can say this translates to probability of z less than that value equals 0.9. Left side वाला area 0.9. ठीक है, ये हम जाके वैल्यू देख लेंगे टेबल से। वी कैन से phi of z is given, that's 0.9. प्रोबेबिलिटी की वैल्यू गिवन है, z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लेट्स फाइंड 0.9 हियर। 0.9 हमें कहाँ मिलता है, यहाँ पे 0.9 से इमीडिएटली छोटी वैल्यू ये है, इस पे वैल्यूज देख लें, 1.2 and 8, that's what we get. Okay, 0.8 हमारे पास था क्या, phi of z equal 0.9, z क्या आ जाएगा 1.2, नो सॉरी
हमें क्या करना था, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 0.9 हमें करना है, z की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके 1.2 एंड देन द सेकंड डेसिमल प्लेस इज 8, 1.28 आ गया। कितना ऐड करना है हमें इसके अंदर, 3 ऐड करना है। वेयर आर यू गेटिंग 3, 3 यहाँ पे कहीं आएगा, 2 और 4 के एग्जैक्टली मिडिल में है, ठीक है। तो किसी के भी ज्यादा क्लोज नहीं है, तो अब क्या करेंगे, कोई भी ले लेंगे, 2 या 4 में से कोई भी आप कंसिडर कर लें। आप 2 ले लें या 4 ले लें, डजंट मैटर। 1 से 1 मिल रहा है आपको, 1 से 2 मिल रहा है, कोई भी आप वहां पे यूज कर सकते हैं। सो लेट्स से 281 या 2815 कर लें, मिडिल वैल्यू ले लें, दैट्स आल्सो फाइन। सो z is equal to 1.281. Let's go back here. We say z is equal to 1.281. ये z की वैल्यू आ गई। z पॉजिटिव था या नेगेटिव था, हमने फिगर आउट किया था z पॉजिटिव है, तो z की यही पॉजिटिव वैल्यू जाके इनपुट कर देंगे फॉर्मूला के अंदर। z equals x minus mu over sigma. z is 1.281. x की जगह पे क्या लिखा हुआ था, 5130 minus the mean, we don't know what the mean is, divided by the standard deviation. Standard deviation क्या दी हुई थी, 40.6. So that's what we have in the denominator here. यहाँ से mean की value निकाल लेंगे, you can see what that turns out to be. mean क्या आ जाता है यहाँ से, so this is 5077.99. उसने क्या कहा हुआ है यहाँ पे, to the nearest hour आपको आंसर देना है। So this is 5080, sorry 78. That's what you should be getting. That's the mean. ठीक है, अच्छा, so that this was inverse normal. Second part देखते हैं, find the probability that a light bulb fails to last for 5000 hours. Probability find करनी है that the light bulb fails to last 5000 hours. How do you find this? Fails to last this much. क्या करेंगे, probability of x being less than 5000, ये आपको फाइंड करनी है। ठीक है, ये सिंपल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, राइट। तो ये तो सिंपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, z अप्लाई कर देंगे, z लेस देन, तो z फॉर्मूला हमारे पास क्या था, z इक्वल्स x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। पहले इसको z में कन्वर्ट कर दें, 5000 माइनस द मीन, मीन हमने फाइंड कर लिया, दैट्स 5070 डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन व्हिच वाज 40.6। ठीक है, यहां से हमारे पास z की वैल्यू कुछ आ जाएगी, या देख लें क्या आती है, z less than minus 1.921. That's what we get here. ठीक है, ये आपने आपने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी। अगेन वी थिंक ऑफ व्हाट द कर्व लुक्स लाइक, ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं है, this is z less than something negative right now. So what you have on the curve is this region, left side वाला region है negative value के। Okay, sorry about that. You got 0 in the middle. उसने जो आपको दिया हुआ है वहां पे उसने कहा है this value here is minus 1.921. इसके लेफ्ट साइड वाला एरिया फाइंड करना है आपने। ठीक है, हाउ डू यू फाइंड दिस एरिया, क्या करते थे इसमें, वी विल फ्लिप दिस, इसको फ्लिप कर देंगे, राइट, इसको फ्लिप कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वी विल गेट probability of z greater than 1.921. तो राइट साइड वाला रीजन आ गया, ये वाला। अब ये भी नहीं फाइंड कर सकते डायरेक्टली, तो इसको क्या करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1.921, इसके लेफ्ट साइड वाला एरिया फाइंड कर लेंगे, उसको 1 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये रीजन आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपने टेबल से फाइंड करनी है। वी आर लुकिंग फॉर 1 माइनस 5 ऑफ 1.921। z की वैल्यू जब 0.921 है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी देखनी है। दिस इज द वैल्यू ऑफ z, 1.921। लेट्स गो टू द टेबल, फाइंड दैट वैल्यू। 1.921, 1.9 is here, and then 2. This is the value that we're getting, 0.9726, and then we have 1 after that.
1 पे क्या आ रहा है हमारे पास, वी आर गेटिंग 1, ठीक है, 1 पे वी आर गेटिंग 1, इस पे 1 ऐड कर लेंगे एंड के ऊपर, वी गेट 0.9727, that's the value of z that we get. This is 0.9727, 1 में से इसको माइनस कर दिया, या देख लें आपके पास क्या आता है, this turns out to be 0.0273. That's the probability that we're looking for. इसका मैं आपको हिंट दे दूंगा, फिर आप बाकी इसको देख लेंगे. A hospital buys 600 of these light bulbs using a suitable approximation. अच्छा, इसने approximation की बात कर ली ना, it's pretty clear कि अच्छा binomial है और उसको normal में करना है. Approximation का सिर्फ एक ही केस है. So originally binomial distribution है, उसको आपने normal में approximate करना है. अब वो binomial distribution क्या है, उसमें n की value 600 हो गई है. We have to find the probability that fewer than 65 light bulbs will last longer than 5130 hours. Okay, so this is binomial originally. Binomial में n की value क्या है, 600. Probability क्या find करनी है, fewer than 65 light bulbs last longer than 5130 hours. What's the success here? Lasting longer than 5130 hours. That's our criteria for success. Okay? What's the probability of success? Lasting longer than 5130 hours. What's this probability? देखिए उसने question में दी हुई थी 10% last longer than 5130 hours. So this probability of success is 0.1. Is that okay? Probability of success हमारे पास क्या होगी, 0.1. तो failure क्या हो जाएगा, 0.9. You will convert it to normal. इसको normal में convert कर लेंगे. आप इसका mean find करेंगे, इसकी standard deviation find करेंगे. ये दो चीजें find कर लेंगे. आपको find क्या करना है, fewer than 65 successes. So you want probability x less than 65. ये आपको evaluate करना है, इसकी continuity correction करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x less than 4.5. ठीक है, and then you can do that using normal distribution. तो z में convert करें और उसको find कर लें आप. ठीक है, ये हमने बहुत सारे किए हैं. इस्लामी questions ये आप आगे कर सकते हैं इसके बाद. Okay, good. चलें, let's start. So the time, okay, good. The time spent by people visiting a certain dentist are independent and normal distributed with mean of 8.2 minutes. Okay, so normal distribution है, उसने बता दिया. Mean is 8.2 and you're given 79% of people who visit this dentist have visits lasting less than 10 minutes. 79% people have visits lasting less than 10 minutes. आपको क्या करना है, आपको standard deviation find करनी है. अच्छा, let me actually write down that information here. So we've got some normal distribution. Mean of this normal distribution is 8.2. उसने बता दिया आपको. Standard deviation first part में आपने find करनी है, so we don't know what that is. We have this information, 79% of people visiting the dentist have visits lasting less than 10 minutes. What information is that? ये क्या चीज दी हुई है उसका? Sir, the probability of x less than 10 would be 0.79. Probability of the time of the visiting time being less than 10 is 0.79. So that's good. So हमें इसने एक probability बताई है कि अच्छा less than 10 minutes last करने की probability क्या है? That is equal to 0.79. X से हम यहाँ पे क्या represent करें? ये जो time spent है, that is basically your variable. Time को हमने X से represent किया यहाँ पे, ठीक है? Probability of X less than 10 is equal to 0.79. So given a probability, आपको उस probability को use करके standard deviation find करनी है, तो data missing है वो find करना है. So this is inverse normal. Probability given है, आपको कुछ data में से कोई चीज find करनी है. सबसे पहला काम क्या करना है? We will convert this to z.
So we'll say probability of Z less than something. We don't know what that is. That is equal to 0.79. ठीक है? अगर आप इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाली कर्व से देखें, लेफ्ट साइड पे जो एरिया है वो कितना है? लेफ्ट साइड पे एरिया 0.79 है, राइट? सो एरिया towards left, that is 0.79. अब देखें, this area is more than 0.5. लेफ्ट साइड पे एरिया ज्यादा है, तो z की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है? z पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? Positive. z will be positive, right? z को हमें यहाँ पे राइट पे क्यों रखना पड़ेगा? ताकि उसके लेफ्ट पे एरिया जो है वो ज्यादा हो जाए. So z is here. So that's the first thing we figure out. Z is positive. अच्छा, ये तो हमने figure out कर लिया. Now it's the standard form already. हमें कुछ करना नहीं पड़ा. Z less than something positive. यही form तो table के अंदर होती है. So हम क्या कहेंगे? Table में हमें ये form चाहिए होती है. वही form हमारे पास है. We can say phi of z. ये notation use करना जरूरी नहीं है. आप उसको बस z less than something positive गुस्सा भी कर सकते हैं. That's fine. Phi of z is equal to 0.79. आपको क्या करना है? अब इस 0.79 वैल्यू पे जाके देख लेना है z वहां पे आपको क्या मिलता है. ठीक है, तो टेबल में जाके देखते हैं. 0.79 remember is the probability. 0.79 आपको probability दी हुई है उसने. आपने corresponding value z find करनी है. अब ये कैसे करते थे? 0.79 जाके देखेंगे probabilities वाले numbers के अंदर. इस यहाँ पे देखेंगे probability के अंदर इधर आपके पास 0.79 के आसपास numbers कौन से आ रहे हैं. So we have this and this. So basically we take the smaller number, जिन दो numbers के दरमियान में होता है उनमें से छोटा number हम ले लेते हैं. So 0.79 से immediately smaller number is this. इस पे हम देख लेंगे हमारे पास क्या values आती हैं. 0.8 and 0. So the first decimal is 0.8 and the second decimal is 0. अब हमें देखना है 0.7881 में कितना add करना पड़ेगा to get 0.79. So how much do we have to add here? We have to add 19, right? 81 में 19 add करेंगे तो क्या हो जाएगा? We will get 00 at the end और ये 79 हो जाएगा यहाँ पे. हमें कितना add करना है? हमें 19 ऐड करना. अब हम क्या करेंगे? राइट साइड पे जाएंगे और देखेंगे 19 कहाँ पर आ रहा है. We've got 19 here. 19 के ऊपर थर्ड डेसिमल प्लेस क्या आ गया? 7 आ गया. So z is equal to 0.807. Does everyone get this? इसमें कोई मसला तो नहीं है? No, sir. आगे समझ. Okay, 0.807. So we say z equals 0.807. अब z की वैल्यू पॉजिटिव थी तो ये पॉजिटिव वैल्यू ही आपने रखनी है. अब सिंपली क्या करना है? फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. z इक्वल्स x माइनस म्यू ओवर सिग्मा. z इज 0.807. x की जगह यहाँ पे क्या रखा हुआ था? x लेस देन 10 की बात हो रही थी तो कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू x यहाँ x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई? 10 आ गई. माइनस म्यू was 8.2 divided by sigma. यहाँ से आपके पास standard deviation आ जाए. Can somebody tell me what this is? 2.23. 2.23. So that's the standard deviation. Okay, आपको standard deviation की value आ गई. Okay, so that's what we had to do in the first part. Probability given थी, आपने standard deviation निकाल ली. Okay, देखिए it's a 9 and 5 14 mark question on normal distribution. 14 marks का क्या मतलब है? 14 out of 50, that's 28%. So almost 30% of the whole S1 paper in this particular session was normal distribution. So it's a lot of marks. So बहुत आपका grade depend करता है. Find the probability. Let's take the second part now. Find the probability that the time spent visiting this dentist by a randomly chosen person deviates from the mean by more than 1 minute.
more than 1 minute से deviate करता है। इसका क्या मतलब है, देखें मीन was 8.2, अब या तो टाइम आपका 7.2 से कम होना चाहिए, राइट, मोर देन 1 मिनट से डिविएट करे, या यानी कि 7.2 से या तो कम हो या फिर 9.2 से बड़ा हो। ये दो हमें फिगर आउट करनी है बेसिकली, ठीक है, या 7.2 से छोटा हो या 9.2 से बड़ा हो, ये दो प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है, इनको ऐड कर देना। ओके, मीन से डिविएट करता है मोर देन 1 मिनट, सो दैट्स व्हाट वी डू हियर। द सेकंड पार्ट, we need two things, probability of x less than 7.2, एक ये फिगर आउट करना है, और इसमें ऐड कर देना है probability of x greater than 9.2, ये दोनों हमें फिगर आउट करना, ठीक है। अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के ऊपर देखें, लेट्स से इसका मीन यहाँ पे क्या था, 8.2 था, so we've got 8.2 in the middle for this distribution. लेट्स से यहाँ पे कोई वैल्यू थी 9.2 और इधर की वैल्यू थी 7.2. What we are looking for is this region on the left, ये एरिया चाहिए, और हमें ये एरिया चाहिए राइट साइड वाला। Now, do we need to calculate both of them? If you look at the graph, do we need to calculate both of them? या हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं अपनी वर्किंग को? दोनों एरियाज कैलकुलेट करने पड़ेंगे या फिर हम एक से भी दोनों काम चला same सकते होंगे। Just calculate 1 and multiply it by 2. Yeah, so दोनों same होंगे, so what we can do is we can just calculate one of them and just multiply that by 2 because the curve is symmetric. मीन से दोनों साइड्स पे देखें इक्वल डिस्टेंस है, राइट साइड पे भी 1 यूनिट अवे है, लेफ्ट साइड पे भी 1 यूनिट अवे है, सो ये जो दोनों एरियाज हैं दे आर गोइंग टू बी एग्जैक्टली द सेम। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट फाइंड एनी वन ऑफ देम, एक फाइंड कर लें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, we'll get the total, ठीक है। तो कोई भी एक देख लें, let's say I choose x greater than 9.2, मैंने ये कैलकुलेट करना, ठीक है। Now how do we calculate this? सबसे पहले काम हम क्या करते थे, यहाँ पे डेटा गिवन है, हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, राइट। सो लेट्स कन्वर्ट इट टू z फर्स्ट। सबसे पहले z में कन्वर्ट कर लेते हैं। x की वैल्यू इज 9.2 minus the mean was 8.2 divided by the standard deviation. You found that in the previous part, it was 2.23. I would recommend you use a more accurate value than that. इसकी exact value क्या आ रही थी, या ज्यादा accurate value इससे? सर मैं फिर चेक करती हूँ। Okay, it's 2.230, so that's okay. So 2.23 ये आपके पास आ गया, ठीक है। अगर आगे कुछ और डेसिमल होता, it would have been better to use that, ताकि आपकी एंड पे accuracy errors ना आए, राउंडिंग ऑफ एरर्स ना आए। स्टैट्स के अंदर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, accuracy काफी इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, so what do we get from this? Z greater than what? 0.448। 0.448। Z की वैल्यूज आपने लिखनी होती है 3 डेसिमल प्लेस तक रखनी होती है, ठीक है, बिकॉज टेबल के अंदर 3 डेसिमल प्लेस तक होती हैं आपकी वैल्यूज Z की। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट दिस, Z greater than 0.448। अब ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? Z less than something positive, ये फॉर्म आपको चाहिए होती है। आपको पता है आपके पास ये कौन सा एरिया आपने कैलकुलेट करना है? दिस इज द एरिया ऑन द राइट साइड, 9.2 के राइट साइड वाला एरिया आपके पास आया। हम क्या कर सकते हैं, वी कैन से दिस एरिया इज द सेम एज 1 माइनस द एरिया टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ दैट। तो 1 में से लेफ्ट वाला एरिया माइनस कर देते हैं, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। दिस इज कन्वर्टेड टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z less than 0.448. Now this is the standard form, z less than something positive, and now we can find this from the table.
ये टेबल से जाके आप देख लेंगे. So basically this you can write this as 1 minus phi of 0.448. Basically 0.448 वैल्यू आप देखनी है z की, उसके प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आ जाती है. ठीक है, वो आप टेबल से जाके देख लेते हैं. 0.4 is here, and then 4 again, that's here. So we've got 0.6700. अच्छा, एक हमारे पास आ गया 6700. अब थर्ड डेसिमल प्लेस 8 है. Third decimal place is 8. We go here. We see we've got 29 here. तो इसमें 29 end पे add कर देंगे. We get 0.6729. The probability is 0.6729. ये जो टेबल से वैल्यू आ रही है हमारे पास, that is 0.6729. So we go back here and put that here. 0.6729. इसको कैलकुलेट कर लें, देखते हैं फर्स्ट क्या आ जाता है. 0.3271. That's the probability that we were looking for. लेकिन keep in mind ये हमने सिर्फ एक पार्ट फाइंड किया यहाँ पे. ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो हमें चाहिए थी, what's that going to be? That's this multiplied by 2. इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, वो आपके पास वो टोटल रीजन आ जाएगा. राइट, उनको हमने एक पार्ट फाइंड किया, उसका दूसरे पार्ट के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 0.3271 multiplied by 2. What do we get? 0.6542. 6542. Yes, sir. Okay, so that's the required probability. ये मैं figure out करना था. ठीक है, any problems with this? Any problem? No, sir. No? Okay, let's move on. Let's look at the third part. The third part में क्या कहता है? Find the probability that of 6 randomly chosen people, more than 2 have visits lasting longer than 10 minutes. Okay, now that looks a bit tricky. 6 randomly chosen people में से more than 2 have visits lasting longer than 10 minutes. अभी कौन सी distribution है? Binomial. Which distribution is this? This is binomial, right? लोगों की बात हो रही है, number of people. So number of people तो discrete होते हैं. So this is not normal. This is discrete. और discrete में हमारे पास 6 people हैं, उसमें से more than 2 की probability आपने find करनी है. तो this is binomial. Okay? Number of successes की बात हो रही है. So binomial की बात हो रही है. अच्छा, so let's write that down here. We have a binomial distribution. अब इस binomial distribution के parameters क्या हैं? इसमें क्या क्या चाहिए होता है? मैं एक तो n चाहिए होता है. N is equal to 6 here. The total number is 6. And the second thing that we need is the probability of success. अच्छा, अब what's the probability of success here? हम success किस चीज को कह रहे हैं यहाँ पे? Success हम कह रहे हैं lasting longer than 10 minutes. That's your success. Longer than 10 minutes को हम success define कर रहे हैं. अब visit lasting longer than 10 minutes की हमें probability find करनी पड़ेगी. वो जो है आपकी success की probability होगी. Now, do we have that information here? हमें उसने बताया हुआ है 79% of people have visits lasting less than 10 minutes. तो more than 10 minutes की क्या probability होगी? 0.21. 0.21, right? तो वो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं. This is 0.21. So probability of success जो यहाँ पर हम define करेंगे, we say that is 0.21. So that's your binomial distribution. ठीक है, अब हमें क्या करना है? We need to find the probability that more than 2 have visits lasting longer than 10 minutes. तो x greater than 2 की probability find करनी है.
That's what we do here. Probability. अब यहाँ पे x से हमने क्या represent किया? Number of people who have visits lasting longer than 10 minutes. X यहाँ पे क्या represent कर रहा है? Number of people having visits lasting longer than 10 minutes. That's what x represents. So what's the probability of x being greater than 2? हमारे पास binomial का formula होता है x equals r NCR p raised to power r q raised to power n minus r. That's the formula that we require. X greater than 2 की probability निकालनी है, so that will be 3, 4, 5, 6. उन सारे cases से निकाल सकते हैं. यहाँ पे कह सकते हैं 1 में से minus कर दें, probability of x equals 0, 1 and 2. वो तीनों आप इसमें से minus कर दें, तो आपके पास ये probability आ जाएगी. ठीक है, तो ये आप evaluate कर लेंगे. अब इस formula के अंदर values input करनी है. 1 minus 6c0 into 0.21 raised to power 0 into 0.79 raised to power 6 minus 6c1 into 0.21 raised to power 1, 0.79 raised to power 5 minus 6c2 into 0.21 raised to power 2 into 0.79 raised to power 4. You have evaluate कर लें, देखें क्या आता है. Someone tell me what we get from this? 0.112 final answer. 0.112. So that's our final result from this. Okay, sorry. 0.112. Okay, that's the probability. Okay, let's move on. Part 4. Now it's a 5-mark question. It says find the probability that of 35 randomly chosen people, fewer than 16 have visits lasting less than 8.2 minutes. Now again, what distribution is this? Here से people की बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है, so it's discrete. And we've got 35 people in total, उसमें से fewer than 16 की probability आपने find करनी है. So this is binomial, जिसमें आपका जो total number है n, that is 35. Let's write that down here first. Part 4. You've got a binomial distribution जिसमें n की value जो है that is 35. The second thing that we need is the probability of success. Now, what's success here? How are we defining success? Less than 8.2 minutes. That's the criteria for success here. What's the probability of success? Visit lasting less than 8.2 minutes. 0.5. I'm not sure. 0.5. Is 8.2. Yes, so that's very good. Mean जो है आपका, remember आपके जो times है वो normally distributed है, और उनका mean क्या है? Mean जो है वो 8.2 है. Normal distribution में remember आपके पास इस तरह की curve होती है ना, mean is right in the middle. Mean आपका बिल्कुल center में होता है. तो right side पे भी उतनी probability है, left पे भी उतनी probability है, left भी 0.5 है, right भी 0.5 है. तो less than 0.5 की probability, less than 8.2 की probability आपके पास क्या होगी? That is 0.5. So we say the probability of success here is 0.5 in this case.
That's the probability of success. Okay. So that's what we use here. We say n is 35 and p is 0.5. आपको find क्या करना है? आपको find करना है probability of x, whatever is our criteria. So x is the number of people who have visits lasting less than 10 minutes. We have to say that we have to find the probability that x is less than 16, fewer than 16, right? Less than 16. इसकी probability आपने find करनी है. Now, how do we find that? Fewer than 16, so that will be 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 until 15. सबकी probabilities निकालनी पड़ेंगी और उन सबको add करना पड़ेगा. Now, should we do that? Should we calculate all of that? Approximation. Binomial to normal. Yes. So what we can do here is we can use binomial to normal approximation here. उसने यहाँ पे आपके क्वेश्चन के अंदर नहीं कहा हुआ कि आपको approximation use करनी है, but the context tells you कि 0 से लेकर 15 तक सारी probabilities अलग-अलग calculate करना, that's a lot of manual work. It's going to be better to use approximation. यहाँ पे उसने नहीं कहा हुआ, अगर आप binomial use करके भी कर दें इसको, 0 से लेकर 15 तक सारी probabilities निकालें, उनको add कर लें, that's going to be acceptable, but the examiner does expect कि आप यहाँ पे approximation use करेंगे, क्योंकि यहाँ पे calculation बहुत ज़्यादा है, right? So that's the better way to go about it, कि आप यहाँ पे approximation use कर लें. अच्छा, अब approximation कैसे करते हैं? एक तो यहाँ पे हमने देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे उसने खुद से नहीं कहा हमें, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छा approximation का criteria meet हो रहा है कि नहीं हो रहा. Quickly check कर लें. NP greater than 5 और NQ greater than 5 दोनों conditions meet हो रही हैं. अगर उसने खुद से कहा होता फिर तो चेक करने की जरूरत नहीं थी. उसने यहाँ पे खुद नहीं कहा हुआ था, आप बस चेक कर लें कि अच्छा are the conditions met. NP क्या आता है? That is 35 into 0.5, that is 17.5, and that is greater than 5. So that's fine. उसमें कोई मसला नहीं है. NQ वो भी आप कैलकुलेट करेंगे, it's the same thing. ये भी आपके पास 17.5 आ जाएगा, that's also greater than 5. तो दोनों conditions meet हो रही हैं. We can use normal approximation. ठीक है, ये आप यहाँ पे छोटा सा साइड पे लिख लें कि अच्छा दोनों conditions meet हो रही हैं, so we can just apply approximation. अब approximation के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? We've got the parameters here for the binomial distribution. उसको हम convert कर लेते हैं normal के अंदर. You have to do it here to save some space. इसको अगर मैं यहाँ पे ले जाऊँ, okay. अब normal में क्या क्या चाहिए? We need the mean. Mean is n times p. Okay. NP is 17.5. into 0.5, that is 17.5. So you got the mean. Mean is 17.5. Standard deviation निकालें, that's square root of NPQ. And that turns out to be square root of 35 into 0.5 into 0.5. You can keep it in square root form, ताकि आगे rounding of errors नहीं आए. ये क्या आता है? 17.5 over 2, that is 8.75 plus square root. Yeah. Yeah, 8.75 square root. So we've got the standard deviation and we've got the mean. ठीक है, ये दोनों चीजें मैं यहाँ पे निकाल ली. अच्छा, ये दोनों चीजें फाइंड कर ली. अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे continuity correction. So that's the second thing that we have to do now.
x greater than 16 है, इसको कन्वर्ट जब करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये हमें देखना है। Now there are two options, remember, हम क्या कहते हैं, 16 जो है that is in the middle, बस दो ऑप्शंस हैं, या तो आप 15.5 यूज करोगे उससे लेस, या आप 16.5 यूज करोगे उसके लेफ्ट साइड के ऊपर। अच्छा, अब लेस देन 16 है, 16 जो है वो इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए, 16 शुड नॉट बी इंक्लूडेड। ओके, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है, तो अगर आप 16.5 से लेफ्ट पे करोगे तो 16 तो आ जाएगा, सो दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल, 16 नहीं आना चाहिए। 15.5 के लेफ्ट पे करोगे उसमें 16 नहीं आता, विच इज करेक्ट। सो जब क्वांटिटी करेक्शन करेंगे, दिस बिकम्स x लेस देन 15.5। ये अब आपने फाइंड कर लेनी है प्रोबेबिलिटी। हाउ डू यू फाइंड दैट? सबसे पहले इसको z में कन्वर्ट कर लें, इट बिकम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 15.5 minus the mean is 17.5 divided by the standard deviation, that's 8.75। ये evaluate कर लें, देख लें आपके पास क्या आता है। What do we get from this? Minus 0.676. Minus 0.676, that's what we get here। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं है। अगर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे इसको देखें रफली, अगर if this is your curve, तो z जो है आपके पास यहाँ पे लेफ्ट पर आ रहा है, दिस इज माइनस 0.676। आपको इसके लेफ्ट साइड वाला एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए आपको। ठीक है, व्हाट वी कैन डू इज, सबसे पहले वी कैन फ्लिप दिस, इसको दूसरी साइड पे ले जाएं। हम कहते हैं कि अच्छा, दिस दैट एरिया इज इक्विवेलेंट टू दिस एरिया ऑन द राइट साइड, उसी के इक्विवेलेंट है। तो हम इसको लिख सकते हैं एज प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 0.676, that's the same thing as that। ठीक है, हमने फ्लिप कर दिया उसको, हमने कहा लेट्स कन्वर्ट दिस। अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, वी वांट z लेस देन समथिंग पॉजिटिव। अब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन से दिस इज द 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 0.676। नाउ दिस इज समथिंग दैट वी कैन फाइंड फ्रॉम द टेबल, ये जाके टेबल से फाइंड कर लेंगे। 1 माइनस 5 ऑफ 0.676, बस ये वैल्यू आप जाके टेबल से देख लेनी है। 0.676 के ऊपर आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी आ रही है। ओके, लेट्स गो टू द टेबल। .676, so this is 0.6 and then 7, we got this number here, 0.7486, and then 6 after that, so we've got 6 here, इसमें आपके पास क्या आ रहा है, 19 इसमें ऐड कर लें, 19, you can do this on your calculator, ये कैलकुलेटर में डाल दें, 7486 प्लस 19, देखें क्या आता है, एंड पे बस डेसिमल लगा देना आपने, so we get 0.7505, is that correct? Yes, sir. 7505, ठीक है, ये आपके पास आ गया। Now we go there, we enter that here, 1 minus 0.7505, and you find this probability, then this is 0.2495. ये हमें figure out करना था। So the weights of letters posted by a certain business are normally distributed with mean 20 grams. Okay, so the weights are normally distributed. So first of all, you got a normal distribution. And in that normal distribution, we know that mu is equal to 20. And we are given that weights of 94% of the letters are within 12 grams of the mean. Find the standard deviation. The standard deviation find करनी है। हमें क्या दिया हुआ है? 94% are within 12 grams of the mean. How do we write that?
How do you write this? Probability में कैसे The लिखेंगे? probability of the weights between 8 and 32 grams is 0.94. Between 8 and 32, so that's good. So within 12 grams का क्या मतलब है? 20 plus minus 12. So 20 minus 12 gives you 8. 20 plus 12 gives you 32. So basically उसने क्या बताया आपको? उसने बताया है the probability of x से क्या represent करें यहाँ पे? Weight represents x. Probability of x being between 8 and 32, that is equal to 0.94. ये probability उसने बताई है. आपको इसको यूज करके स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है. ठीक है, अब ये इंटरवल दिया हुआ है, आपको प्रोबेबिलिटी पता है, इनवर्स नॉर्मल यूज करके आपने ये स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है. अच्छा, सबसे पहले जब ये इंटरवल दिया होता है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कन्वर्ट इट टू, जब इंटरवल आपके पास टू साइडेड इंटरवल है ना, इस तरह से बिटवीन टू वैल्यूज, यू फर्स्ट हैव वन साइडेड इंटरवल, बिकॉज अदरवाइज जो है ये कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है. इसको वन साइडेड इंटरवल में पहले कन्वर्ट करना है. How are we going to do that? We're going to do that using the normal distribution curve, and we'll try to think of that using the curve. इसको हम one sided interval में कैसे convert कर सकते हैं? Because that will make it easier to comprehend. So this is how the normal distribution, this normal distribution looks like. ठीक है, अभी हम इसको स्टैंडर्डाइज नहीं किया, तो इसका मीन यहाँ पे क्या है? इसका मीन हमारे पास मिडिल में 20 है. 20 is the mean. We got some value here. Let's say this is here. This is 8. We got some value here. This is 32. उसने हमें क्या बता दिया है कि ये जो दरमियान वाला रीजन है ना सारा, this is going to be 0.94. This region is 0.94. Okay. What about the regions on the sides here? ये साइड वाला रीजन है, ये कितना होएगा? और ये वाला रीजन कितना होएगा? The middle region is 0.94. Yes, so 0.94 middle में, तो बाकी कितना बचा? 0.06. But since the curve is symmetric, that means 0.03 जो है आपका एक साइड पर होएगा और 0.03 आपका दूसरे साइड पर होएगा. Right? So what we can do from this is, what we can understand from this is, अगर हम 32 के लेफ्ट साइड पे देखें, 32 के लेफ्ट साइड पे हम कह सकते हैं कि अच्छा, probability of x being less than 32, that is actually 0.94 plus 0.03, and that is 0.97. तो वो two sided interval के बजाय हमने इसको one sided interval में convert कर लिया, and it looks like this. Right? Does this make sense to everyone? Sir, can we do like this? कि हम क्या probability of x less than 32 minus 0.03 और फिर हम उसकी final probability निकाल लें? बिल्कुल, उससे भी आपके पास यही आ जाएगा ना? Yeah, okay. You get the same thing from that. Minus 0.3 को right पे, 0.03 को right side पे ले जाएं, you get the same thing from that, right? So once you've got this, the rest is straightforward. आपको वही process use करना है. Inverse normal का क्या करेंगे? We first convert it to z. We say z less than something is equal to 0.97. अच्छा, अब ये जब मैंने यहाँ पे ये बनाया है, this is for x. यहाँ पे मेरे पास मीन 20 है ना, ये x की डिस्ट्रीब्यूशन है जो ओरिजिनल आपका वेरिएबल. बट नाउ यू गॉट z हियर, तो z का ग्राफ किस तरह वो छोड़ सकता है? मेरे पास z की कर्व है, लेट्स से इसमें मेरे पास x एक्सिस के ऊपर अब z है. ठीक है, इन द मिडल आई हैव गॉट 0. लेफ्ट साइड पे एरिया 0.97 है, लेफ्ट साइड पे एरिया ज्यादा है, that means my z is going to be here, z positive है. ठीक है, आपको नजर आ रहा है लेफ्ट पे एरिया ज्यादा है, राइट?
तो z जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होना चाहिए और उसके लेफ्ट साइड का एरिया कितना है, दैट इज 0.97. ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है, z लेस देन समथिंग पॉजिटिव, so we basically are given phi of z is equal to 0.97. स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू गिवन है, z आपको फाइंड करना है. We go to the table, we know that phi of z is 0.97. 0.97 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें जाके प्रोबेबिलिटी देख लेंगे. 0.97, yeah, so we got this number that's immediately below 0.97. इस नंबर का पास क्या आ रहा है, 1.8 and 8. So z is 1.88. ठीक है, अब इसमें कितना ऐड करना है टू मेक इट 0.97 एग्जैक्ट, 1 ऐड करना है. ठीक है, अब 1 आपके पास देखें यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है. What you can do is you can use either of them. आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं. आप 1 यूज कर लें या 2 यूज कर लें, इन दोनों में आ रहा है ना, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो आप इन दोनों नंबर्स में से कुछ भी ले सकते हैं as the third decimal. 1 ले लें, 2 ले लें, doesn't matter. So I can take 1 for instance. You could take 1.88, 2 as well if you wanted. दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं. ठीक है, ये आपके पास z की वैल्यू आ गई. I'm going to write that here, 1.881. Z equals x minus mu over sigma. 1.881 equals x. X का क्या यहाँ पे क्या आ रहा था, 32. 32 minus the mean was 20 divided by sigma. You get your standard deviation from here. ठीक है, क्या आता है, 6.380. 6.380. So that's your standard deviation, 6.38. ये हमें figure out करनी थी यहाँ पे. Okay, let's move on to the next one. Now it says find the probability that a randomly chosen letter weighs more than 13 grams. अब ये simple आपके पास normal distribution है. Probability of x greater than 13 ये find करनी है. ठीक है, more than 13 grams की probability find करनी है. So क्या करेंगे, सबसे पहले इसको z में convert कर लेंगे. Probability of z greater than 13. Remember the formula, z minus mu, x minus mu over sigma. So 13 minus the mean is 20 divided by sigma. We found that in the previous part, 6.38. ये आपके पास कुछ आ जाएगा यहाँ से, z greater than minus 7 over 6.38. Minus 1.097. Minus 1.097. ये आपके पास z आ गया. z should be greater than minus 1.097. What do we do now? We think of the normal distribution curve. Standard normal curve आपके पास किस तरह की होगी? It's going to look like this. Let's say it looks like this. And we've got a negative value of z. So basically इधर आ रहा होगा minus 1.097. इसके राइट साइड वाले एरिया ये आपको फिगर आउट करना है. ठीक है, अब ये तो हम टेबल से नहीं देख सकते. So what we do for this is we just flip this. इसको flip कर देंगे तो ये आपके पास फिगर इस तरह की बन आपके पास ये क्या आ जाएगा. This area is the same as saying z less than 1.097. राइट, तो उसको बेसिकली अगर आप फ्लिप कर लो इस फिगर को, so that area that you see on the left here is the same as the area towards the left of 1.097. उसको हमने पॉजिटिव करके अपने ग्राफ को फ्लिप कर दिया, तो आपने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, so that's what you do here. ये आप जाके टेबल से देख लेंगे. It's of the standard form now. Z less than something positive, phi of 1.097. ये आपने जाके टेबल से वैल्यू देख लेनी. Z की वैल्यू 1.097 है,
उस पर probability देख लें क्या आती है. Let's do this quickly. 1.097. So we got 1.09. This is 0.8621. And then 7 is the third decimal place. 7 पे आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे? 16. We add 1/6 to this. We get 0.8637. So this is 0.8637. ये जाके वहाँ पे लिख लें. (0.863) is the probability that we had to find there. All right. Let's look at the third part. Third part में क्या कहता है? Find the probability that at least 2 of a random sample of 7 letters have weights which are more than 12 grams above the mean. Okay. At least 2 of a random sample of 7 letters. Letters की बात हो रही है, number of letters. It's a discrete distribution. So ये binomial है यहाँ पे. 7 letters total है, उसमें से at least 2 successes आपको चाहिए. अच्छा, so this is binomial. First of all, let's write that down. We've got a binomial distribution. अब इस binomial distribution के अंदर we know that n is 7. What about the probability of success? More than 12 grams above the mean, that's your success here. More than 12 grams above the mean. What's the probability for this? What's the probability? 0.9. No. 0.03. 03. Does everyone agree to that? More than 12 grams above the mean. इसका क्या मतलब है? कहाँ गया? 20 is your mean, right? 12 more than 12 grams above the mean. That means probability of x greater than 32 की बात कर रहा है, right? Weight जो है वो 32 से ज़्यादा होना चाहिए. We found that earlier in the first part. 32 के right side पे देखें कितनी probability है? 0.03. So probability of success जो है यहाँ पे, that is 0.03. 32 से ज़्यादा होने की probability, that's basically this number here. ठीक है? Okay, so that's your probability of success. It's 0.03. Success की probability भी आ गई. अब यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है? नंबर ऑफ लेटर्स. हमें क्या करना है? At least 2 successes. X greater than or equal to 2. ये probability find करनी है. उसमें X से हमने क्या represent किया? Number of letters या number of successes basically. Successes का क्या मतलब है? Number of letters that have weights more than 12 grams above the mean. That's what we're looking for. Greater than or equal to 2 की probability निकालनी है. That will be 2, 3, 4, 5, 6, 7. सबकी निकालनी पड़ेगी. We can reverse this. We can say that's the same thing as saying 1 minus probability of x less than 2, which is 1 minus probability of x equals 0 and x equals 1. इन दोनों की probability इसमें से minus कर दें. Remember the binomial formula. Probability that x equals r is equal to NCR. P raised to power r, q raised to power n minus r. What does that give us? इसमें जाके input कर दें. 1 minus n was 7, 7c0 into p, which is 0.03 raised to power 0 into 0.97 raised to power 7. अगर p 0.03 है तो q क्या होएगा? 0.97.
minus 7 C1 into 0.03 raised to power 1 into 0.97 raised to power 6. You can evaluate this and see what you get. ये क्या आता है? सर मैं कर रही हूँ। सबने मनाइल का आउटसोर्स किया हुआ है? 0.017. 0.017. Will I get full marks for this? Will I get full marks for writing 0.017? How many significant figures is that? 2. This is 2 significant figures. We want our answers to at least 3 significant figures. So तो पूरा आगे क्या आएगा? 0.0171 क्योंकि आगे 0.9 okay 0.0171. So that's what we write. Okay, ज़्यादा लिख सकते हैं आप 0.9 बाद में लिखते हैं, that's okay, लेकिन कम accuracy नहीं हो सकती. So that's our result. That's the probability that we were looking for. Okay? Let's do this quickly. The random variable x is such that x is normally distributed. Now remember this notation. What does it mean? This is mu 82, 126. Is that standard deviation? variance. 126. That's variance, right? So that's sigma square. Variance. So we've got a normal distribution. This normal distribution ke andar we know that mu is equal to 82 and standard deviation is square root of 126. Okay. Now value of x is chosen at random and rounded to the nearest whole number. Rounded to the nearest whole number. Find the probability that this whole number is 84. Okay. Kya find karna hai? Are we looking for x equals 84? Is that what we're looking for? Or is it something else? X is less than 84 क्योंकि फिर round off होके 84 होगा. X less than 84 होगा तो round off होके 84 हो जाएगा. If it's between 84 and 83.5. Okay, so if it is between 83.5 and 84, then it will round off to 84. Is that correct? $84.5. 84.5, right? So 84.2 भी तो 84 पे round off हो रहा होगा ना. 84.5 तक जितने numbers होंगे वो 84 पे round off हो रहे होंगे. So we are basically looking for the probability that x is between 83.5 and 84.5. इन दोनों के दरमियान में होने की probability हमें figure out करनी है. ठीक है? Because इनके दरमियान में कोई भी number होएगा वो 84 पे round off होएगा. ठीक है? इसमें एक validity sign डालें ना डालें doesn't matter. Continuous distribution में remember it doesn't matter. And similarly x equals 84 जो है, remember हमने कहा था इसकी sense नहीं बनती continuous distribution के अंदर. Equal to की probability हमेशा 0 होती है continuous के अंदर. So equal to 84 भी हम यहाँ पे नहीं करेंगे. Round off करके 84 आता है, इसका मतलब है x should be between 83.5 and 84.5. ये probability हमें निकाल लेनी है. तो ये आप देख लें कैसे करेंगे. We can convert it to z first. तो z में convert कर दें. Probability find करनी है ना आपको. We can say z is between 83.5 minus 82. 82 is the mean, right? Divided by 126 and 83.5 minus 84.5 minus 82 divided by square root of 126.
So can somebody tell me ये numbers क्या आते हैं? 0.134 0.134 and 0.223. 0.223. ठीक है? So if you look at the curve for this, इसमें normal distribution curve अगर उसका सोचें, we are basically looking for region between two values of c. तो अगर एक value यहाँ पे मेरे पास होती, let's say 0.134, and I had another value here which was, I don't know, 0.223. इन दोनों के दरमियान में probability find करनी है. ठीक है? So we are basically looking for this region. ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं? We can say it's the same thing as saying 0.223 के लेफ्ट साइड वाला एरिया, उसमें से माइनस कर दें 0.134 के लेफ्ट साइड वाला एरिया. So it's the same thing as saying probability of z less than 0.223 minus probability of z less, and that's going to give us the area in the middle. ठीक है? अभी दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है, z less than something positive, z less than something positive. ये हम डायरेक्टली टेबल से देख सकते हैं. ये दोनों नंबर्स जाके टेबल से देख लेंगे. We're looking for phi of 0.223 minus phi of 0.134. ये दोनों नंबर्स जाके फाइंड करना. ठीक है? 0.223 पे देख लें क्या आता है. Point 2 and then 2. We've got 0.5871. And then 3 पे आपके पास 12 आ रहा है. 0.5871 एंड पे 1 2 ऐड कर देंगे, you will get 0.5871 plus 12 is 83. 0.5883 आ गया. That's one number. And then 0.134, 0.13, और फिर थर्ड डेसिमल इज 4, 16 इसमें ऐड करना है इनके ऊपर. सो 0.5517, तो क्या था, सॉरी 0.134 पे देखना था, राइट. सो 0.5517 में 16 ऐड कर दिया. वो आप लिख के कर लें. ठीक है, I'm just going to do this quickly. This is going to be 5533. ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा. 0.5533. I'm going to write that here. 0.5533. And now you can evaluate this. या देख लें क्या आता. 0.035. 0.035. That's the probability that we were looking for. ठीक है? Okay. So that was the first part. Let's look at the second part. 5 independent observations of X are taken. 5 independent observations of X are taken. Find the probability that at most one of them is greater than 87. At most one of them is greater than 87. Achha, what distribution is this? Binomial. This is binomial, right? 5 observations नहीं है, उसमें से at most one being something की probability find करनी है. Okay, so it's discrete. और इसमें number of observations की बात हो रही है ना. Number of observations, right? So number of observations is something discrete, so it's binomial. और इस binomial के अंदर what's the n is 5, right? Number of observations 5 in total. What about probability of success? Success कैसे define हुई भी है? Success is defined as greater than 87. This is your criteria for success. Success की definition क्या है? Greater than 87. Now, what's the probability of X being greater than 87?
What's the probability of x being greater than 87? Do we have that here? पता है मैं वो? No. We don't have that here, right? So we have to find that. Approximation. Approximation. X देखें यहाँ पे ये original variable है. X is normally distributed, remember? X जो है that is normally distributed. 82 उसका mean था और ये standard deviation थी square root of 126. So basically x greater than 87 की हमें पहले देखिए एक आपके पास binomial distribution है जो ये आपके पास main distribution है. अब इसमें probability of success क्या है? ये probability of success जो है हमें नहीं पता. ये हमें figure out करनी है. अभी probability of success कैसे find करेंगे? Probability of success जो है that is that the number x is greater than 87. अब ये x क्या है? x तो normally distributed था. x तो normally distributed था और उसके ये हमें पता था कि उसका एक mean है कुछ which was 86 और इसकी standard deviation थी square root of 126. 82 and 126. This is what x was. तो हमें क्या करना पड़ेगा पहले? Probability of success find करनी पड़ेगी which is x greater than 87. ये पहले probability निकालनी पड़ेगी using normal distribution because x तो normally distribute. तो पहले हम वो figure out. X greater than 87. How do you figure that out? We can convert it to z first. It means z greater than 87 minus 82 divided by sigma, that is square root of 126. ये evaluate करें. So you see, this is again an example of 0.445. This is again an example of a normal distribution within a binomial distribution. एक binomial है outer distribution, उसके अंदर एक normal distribution है, right? So हमने normal distribution को use करके binomial की success की probability find करनी है पहले. So evaluate this thing. अब ये z greater than something है, z greater than a positive value. So z जो है वो आपके पास इधर आ रहा होगा कहीं पे, right side पे. z इधर आ रहा होगा. That's 0.445. इसके right side वाला area आपने देखना है. अभी directly तो नहीं निकाल सकते. हम क्या करेंगे? We convert it to probability of 1 minus probability of z less than 0.445. And now we find this probability from the table. This is 1 minus phi of 0.445. 0.445 पे जाके देखना है आपके पास क्या आता है. 0.445. So 0.4 and then 4, that's 0.6700, and then 5, that's 18. 6700 में 18 add कर देंगे end के ऊपर, you'll get 0.6718 from that. ठीक है? This is 0.6718. What do we get from this? 0.3282. Is that correct? Yes, sir. Now this is our probability of success. ये आपके पास probability of success आई है, and that is 0.3282. ये इस binomial distribution की ये success की probability है. Clear है सबको ये? Okay. अब इस binomial के अंदर हमें क्या करना है? इस binomial के अंदर हमें ये probability find करनी है at most one की probability find करनी है. At most का क्या मतलब है? Less than or equal to 1. 5 में से at most 1 successes. अब यहाँ पे हमारा different variable है. हम इसको x की बजाय किसी और से represent कर लेते हैं. y से represent कर लेते हैं. Because x यहाँ पे इसी part के अंदर हमने use किया किसी और चीज के लिए. y ले लें.
y is the number of successes. So हमें क्या find करना है? Y being less than or equal to 1. At most one success चाहिए ना? At most one. So less than or equal to 1 की probability find करनी है. You've got two cases there. या तो equal to 0 हो सकता है या फिर equal to 1 हो सकता है. इन दोनों की probabilities निकाल लेंगे, उनको add कर देंगे. ठीक है, using binomial formula. Binomial का formula में पता है NC0, so 5C0 into probability of success, that's 0.3282 raised to power 0 into probability of failure. Failure की probability यहाँ पे क्या आती है? 0.6718. 1 में से minus कर दिया. 0.6718 raised to power 5 plus 5C1 into 0.3282 into 0.6718 raised to power 4. You just add those probabilities, we'll get your result. What do you get from this? Okay, I'm getting 0.471. Can somebody confirm this? 0.471. याद है? Yes, ये याद है. I accidentally subtracted add करने के बजाय. Okay, all right, good. So this is what we get. ये हमारे पास probability आ गई. ठीक है? Let's do the last part. Again, that's a bit tricky. Find the value of k such that probability of x being between 87 and k is 0.3. Okay. Third part. Probability of x being between 87 and k, that is equal to 0.3. Probability given है, k find करना है आपको. Again, it's inverse normal. और inverse normal के अंदर आपको क्या दिया हुआ है? उसने ये two-sided interval दिया हुआ है इस तरह से, मतलब दोनों साइड से bounded है. Okay? हमें क्या करना है? सबसे पहले तो उसको one-sided में convert करना है किसी तरह से, because otherwise we can't deal with this. Okay? तो क्या करेंगे? पहले तो उसको ग्राफ से देख लें कि how does it actually look like. Remember x हमारे पास क्या है? X is a normal, x is a variable that's normally distributed. और उसका mean और हमें वो क्या values दी हुई थी? X is a normally distributed variable जिसमें mu was 82 and standard deviation was square root of 126. ये information हमें पता है पहले question से. Mean is 82, standard deviation is square root of 126. Okay, I'll try to be quick about it so we can end time. 82 is right in the middle. ठीक है? 87 किधर आएगा? राइट साइड पे आ रहा है कहीं पे. अच्छा, it may be somewhere here, let's say. और k फिर कहाँ पर होगा? k उसके भी राइट साइड पर होगा कहीं पे. Let's say this is k. So basically हमें उसने बताया है कि जो ये वाला रीजन है ना, this region is 0.3. और से बड़ा कर दें इसको. So we've got 87 here. This region is 0.3. ये रीजन इसने बता दिया 0.3 है. आपको k फाइंड करना है किसी तरह से. ओके. अच्छा, अब ये रीजन 0.3 है, तो अब हम k कैसे फाइंड करें? सबसे पहला काम हम क्या कर सकते हैं? हम ये फाइंड कर सकते हैं कि 87 के लेफ्ट साइड पे कितना एरिया है. Because right now we don't know that. Because once we have found the area towards the left of 87, then we can figure out कि अच्छा k के लेफ्ट पे कितना होएगा. Right? So probability of x less than, yeah. So probability of x less than 87, we actually did that in the last part. Last part की working के अंदर हमने less than 87 कहीं पे find किया था इधर. या greater than 87 हमने ये find किया था 0.383282. Less than 87 is basically 0.6718.
ये हमने लास्ट पार्ट में फाइंड कर लिया हुआ है. This is 0.6718. Right? I can write that here on the side. हमने ये फाइंड किया था 87 greater than 87 की probability पिछले पार्ट में. That was 0.3282. ये हमने previous part में फाइंड किया. Okay? इसका मतलब ये हुआ x less than 87 कितना हो गया फिर 1 minus 10, and that is 0.6718. You can actually just figure it out directly from the working from the previous part as well. But if that's more confusing, you can just use this 0.6718. ये probability हमने पहले find कर ली है पिछले part के अंदर कि 87 के left side पे इतना area है. Okay. So what do we know about probability of x less than k then? वो कितना आएगा? That will be 0.6718 plus 0.3 because ये area भी उसके अंदर आ गया है. So x less than k की probability हमारे पास कितनी आ गई? That is equal to 0.9718, right? And now after this, it's just a simple inverse normal problem. आप इसको z में convert कर दें, इससे probability of z less than something is equal to 0.9718, right? Left side पे area, left side पे जो area है, that is greater than 0.5, right? Area towards left is 0.9718, and this is more than 0.5. आपको ऊपर ग्राफ से भी नजर आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू बनेगी आपकी. z की वैल्यू पॉजिटिव है, राइट? आप ग्राफ से भी देख सकते हो, लेफ्ट साइड पे ज्यादा एरिया, z पॉजिटिव होना चाहिए. So it's the standard form already, z less than something positive. Standard form के अंदर already है. आप graphically अगर देखो इसको, it will look like this. Sir, sorry to interrupt. Class start होगी chemistry की. जी, and we are just ending in 1 minute. Okay, so this is the value of z that we found here. Sorry, z की वैल्यू फाइंड करनी है. इसके लेफ्ट साइड पे ये पूरा एरिया कितना है? हमें पता है कि this region is 0.9718. ठीक है, ये हम z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे टेबल से और फॉर्मूला यूज कर लेंगे. लेट्स डू दिस वेरी क्विकली. 0.9718 जाके हमने टेबल से देखना है. Sorry, phi of z is equal to 0.9718. ये probability आपको given है 0.9718. अब ये जहाँ पे देख लें 0.9718, उससे छोटा नंबर आपको ये मिल रहा है. Immediately smaller, that's 1.9. And then 0 is the second decimal, 1.90. कितना ऐड करना है 9718 के लिए? We need to add 5 here. 5 यहाँ पे राइट साइड पे किधर मिल रहा है आपको? We have 5 here और here. दोनों में से कोई भी यूज कर लें, या 8 यूज कर लें या 9 यूज कर लें. You can use any of them. Let's say I use 8. 9 भी यूज कर सकते थे वहां पे. So z की वैल्यू क्या आ गई? 1.908. z is 1.908. z पॉजिटिव था, हमें पता था, तो उसको ऐसे रहने देंगे. We just use the formula now. Z equals x minus mu over sigma. That's 1.908. x आपको नहीं पता, यहाँ पे x की जगह पे k है basically. So k minus the mean. Mean was 82 divided by the standard deviation, which was square root of 126. यहाँ से आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी. Somebody tell me what this stands for. 3.42.
3.42. So that's the value of K that we were looking for. Okay. Clear is sabko? Any problems with this? Any issues? So this was a pretty tricky one. I hope that makes sense to everyone. So that's the value of K that we got. Okay, so that's it for today. That was normal distribution. If you understand all of this, you should be able to do any question now.